Pakistan, Rahi.com, Thai PPAPS, Health Management System, Building Management System, School Management System, and Rehan Autos. Rehan Allahwala is the expert in the field of VoIP, ERP systems, CRM systems architecture, VoIP network design, and international marketing. He regularly speaks on install-based conferences and seminars around the world. Rehan Allahwala is a key contributor in philanthropic works and supports various NGOs and charity foundations. He also founded the Supertech Foundation with the mission to eradicate poverty from the world and is working on an almost impossible mission of creating processes to help create 1 million new businesses by 2014. He's starting with only $100 and generating at least $300 a month. His ultimate goal is to create a platform to unite humanity and create equality like never before. अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। नहीं आ रही हो? अस्सलामुअलैकुम। अब आ रही हो? कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग थके हैं, कुछ लोग उदास हैं, कुछ लोग अभी भी SMS पे लगे हुए हैं, कुछ लोग जबरदस्ती आए हैं, कुछ लोग नाराज होकर आए हैं, किसी की डेट खराब है, सब पता है। तो कभी मैं भी आ जाता था, बट अफसोस की बात यह है कि मुझे इसकी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका नहीं मिला। यू हैव अ ब्रिलियंट कैंपस, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज का टॉपिक मुझे दिया गया है कि 10,000 रुपए से कारोबार कैसे शुरू करते हैं। एनीबडी इंटरेस्टेड? कोई इंटरेस्टेड नहीं है कोई? हाथ उठाओ। 1 2 3 5 6 आप दिखा रहे हैं। कौन समझता है कि कारोबार 10,000 रुपए में शुरू नहीं हो सकता है? कौन समझता है कि 10,000 रुपए से कोई कारोबार की जरूरत है? उल्लू बनाने आए एक ही आदमी, 2, एक निंजा है, 3 4 5। ओके ठीक है, क्यों समझते हो बताओ। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि 10,000 रुपए में डेट नहीं होती। 10,000 और एनीबडी एल्स? निंजा हाथ आप और कोई? एनीबडी एल्स? 4-5 हाथ थे यार, 2 जवाब आए। हाँ क्या बता दो यार, नंबर पूरे करने। अच्छा नहीं हो सकता। हाँ आवाज नहीं आ रही। यहाँ कितना पैसा देते हो आने के लिए? चलो खैर हम गलत टॉपिक पे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो मुझको बच्चे ने पूछा कि भाई आप किस टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने कहा भाई जब मैं ये वाली बातें करता हूँ तो बच्चे नाराज होते हैं, कहते हैं अपनी कहानी सुना दें कि आप यहाँ तक कैसे आए। तो 2 ऑप्शन हैं, या तो कहानी सुना सकता हूँ या 10,000 रुपए में कारोबार कैसे हो सकते हैं वो सुना देता हूँ। जवाब मिला था दोनों सुना दें, तो क्या सुनाए? दोनों। अच्छा जी, मेरा नाम रेहान है, आपने देख लिया। मेरा तारुफ 13 साल की उम्र में जब साथ मैंने अपने पहला कारोबार शुरू किया, उसके अंदर मैं कॉम्प्यूटर 64 की गेम्स बेचता था। उसके बाद मुझे जुनून आया, मैंने कुछ एक वॉइस डिजिटाइजर हार्डवेयर बनाने की कोशिश करी, वो बना लिया, कोई भी नहीं बेका। और उस पर इतना बड़ा बड़ा मेड इन पाकिस्तान लिखवाया। कैन वी गो बैक टू द पिक्चर? हमारे पास उसके बाद आई फेल्ड badly in that. Maybe I sold 1 device. I was in 9th class though, and then I made another hardware. उसके बाद उसके डब्बे डिजाइन कराए। उसके बाद मैं भागा और I tried to make a name for the country a lot. I worked on that a lot, and
मैं अच्छी आवाज भी रखता था, लेकिन मुझे मना था कि भाई आपने गाना नहीं गाना है, आपने बिल्ली अपने आप गा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं गा सकते। सो ये पॉज कीजिएगा। तो ये डब्बा है, इसके ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई डिजाइन वाले भी हैं, देख लीजिए कैसा है डब्बा। सही, बुरा नहीं करना, बहुत बुरा है, सही है। ये प्लास्टिक की शीट का बना हुआ है। We made only 100 pieces and we bended the plastic sheet, and we had to be creative because the die cost at least 100,000 rupees and I had no money. So I went around, asked people कि कैसे करें। So this guy told me कि शीट को लेके हम बेंड करेंगे, प्लास्टिक की लकड़ी की डाई बनेगी 600 रुपए की, उसको बेंड करेंगे, शीट करके वो डब्बे की शक्ल दे जाए। So it's a bended box, and that made in Pakistan glows at night. It's printed with iridium, radium जो होता है। This is when I was in class 9. Okay, so I had to learn a lot, and I had to learn around and try to do that. Same thing went to my logo, and it was called Pakistan Computers at that time. That was the first company. We went, फिर उसके बाद थोड़ा ये confusing है आप अगर later। फिर ये एक और डिवाइस बनाई, इसका नाम था डॉल्फिन डॉस, एंड डॉल्फिन डॉस वाज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू उमेर कंप्यूटर यूज करते थे। तो एक फास्टफूड कार्ट्रिज होता था, फास्टफूड कार्ट्रिज से ज्यादा तेज लोडिंग हो जाती है। जैसे आपको बैंडविड्थ तेज लगती है ना कि भाई 1 meg कनेक्शन है, 10 meg कनेक्शन है, 50 meg कनेक्शन है, तो स्पीड ऑफ लोडिंग तेज होती है। जैसे USB 1 होता है, USB 2 होता है, USB 4 होता है, तो उसी तरह से सीरियल के ऊपर, सीरियल पोर्ट के ऊपर, जो अब तो उसमें होता ही नहीं है सीरियल पोर्ट, USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सीरियल पोर्ट को हमने पैरेलल पोर्ट में कन्वर्ट करके स्पीड को तेज करने की कोशिश करी। We just copied hardware. It wasn't an innovation, it was copying hardware, but again, I was 16 and I had to learn so much कि PCB कैसे डिजाइन होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, and I had to hide from my father all the time because he didn't want me to do any of that. फिर आगे चल, then I started refurbishing Commodore 64 computers. I started selling that, which leads into something which we're doing now, refurbishing cars. हमने नया कंप्यूटर आता था 5,000 रुपए का, हमने 3,500 रुपए का कंप्यूटर 6 महीने की गारंटी के साथ बेचना शुरू किया। कोई खराबी हो जाए तो आप ले आइए, हम दूसरा दे दें। And we started doing that. I made a 1 crore rupee sale, and I was in 17, and at that time, and that was a crore of the lot. That business, which I started that, I bought it for 50,000 rupees and 5,000 रुपए महीना किस्तों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास पैसे अगेन नहीं थे। And when I started my first business also, I had no money. I did it for fun. So everything I've always done has been for fun. It has never been to make money. Money has always come as a byproduct. My focus has never been money. कि इससे इतने पैसे कमाने चाहिए। Coming back to further, उसके बाद सोल्डरिंग कंपनी बनाई, उसके बाद कंप्यूटर क्लिनिक खरीदा, आल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का I had a contract for entire आल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल to refurbish their computers। तो अभी क्या कहते हैं उसकी सर्विस इंडस्ट्री उनकी जो थी, वो मैं उनके कंप्यूटर्स को हम सर्विस करते थे। तो जितने भी कंप्यूटर्स हम लेके आते थे उनको हम खोल देते थे। Now remember I am again in class 11 as an intern, and I had never had a course on how to fix computers. It was just learning, which I have been doing. सारी चीजें जो घर में मुझे मिलती तोड़ ताड़ के उसको खोल खाल के उसके साथ किया जाता था। That's how I learned and grew. And doing that, I learned how to open things up and close them back. And फिर हम कंप्यूटर के साथ यही करते थे, पूरा कीबोर्ड उधेड़ देते थे। पूरा कीबोर्ड को उधेड़ने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में डाल के उसके बटन धोते थे। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद उसको सुखाते थे हेयर ड्रायर के साथ, और उसके बाद उसको वापस असेंबल करते थे। And it looked like brand new. And then we used to wrap it up in a theli में लगा के लगता था यार क्या जबरदस्त सर्विस की। And we used to charge the least of everybody else. This is in 1990s, 91 maybe, 92 maybe. Then फिर और जुनूनी हरकतें करी। उसके बाद I started marketing, selling fax button card. इंटरनेट उस वक्त नहीं होता था, so I started selling UPS machines. उस वक्त बिजली नहीं जाती थी, कम जाती थी, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए लोग यूपीएस खरीदते थे। क्या कंप्यूटर खराब हो जाएगा अगर हमने यूपीएस नहीं रखा।
इसलिए खरीदते थे, इसलिए नहीं खरीदते थे कि बिजली नहीं होगी। है तो हमने वो बेचना शुरू करे, then we started became an exporter for that. So we I was selected by Export Promotion Bureau of Pakistan. I was sent with Benazir to Turkmenistan, Russia, and then there was a delegation going to Australia, and on the government of Australia's expense first time. मैं 20 साल का था तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया and I represented Pakistan. 2 लोग मुझे भेजा and I exhibited there. And there I started growing and learning. It was my first English interaction with other people, जहाँ पे मैंने जाके उनसे सीखना शुरू किया and I started changing as per se. Long story short, अगर थोड़ा सा और fast forward कर देते हैं तो then I started a second email company in Pakistan called BrainNet. Then I started Faxaway. Then I became the distributor for Net2Phone. I was a beta tester for Net2Phone. Then I started a company, a product called Superphone. Net2Phone cheated me 4 times. Net2Phone याद है किसी को? Yes. 2-3 को याद है? Net2Phone was the first application which allowed people to make a phone call on a landline from a computer. And I tested it in '96, and then it was released in '96 later on in the year. And then our sale was $150,000 a month of that from this area. And they didn't give me a penny of commission because, again, there was no money involved in anything. Everything was marketing. There was nothing else. There was no capital expense, sale नहीं थी, capital involvement नहीं थी, company involvement नहीं थी कि Net2Phone खुद बेचता था. I was just the marketing guy, telling people about it, teaching people about it, how to use it, all that stuff. उसके बाद फिर मैंने जब उन्होंने मुझे cheat किया, they didn't pay me my commissions, so I think I need to start my own brand name. But I have never been to school. Metric के बाद मैं कभी school ही नहीं गया, so I had no clue how software works, how technologies work, how everything else works. So I went and with a friend of mine opened a company in the US because selling voice was illegal in Pakistan. So I started a company in the US and which I chose to close, again failed, and I started another one. Which is this one, and then I created a product which was called Superphone with under the name Super Technologies, and we sold again a lot, and we used to advertise on ZTV in the US and other newspapers in the US, and we were selling those boxes to people in the US. फिर उसके बाद we made a lot of money again, and then 9/11 happened. 2003 के बाद हमने टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. टेक्नोलॉजी के अंदर आप टेक्सटाइल वाली टेक्नोलॉजी में अभी मुझे उन्होंने दिखाया कि हाथ से खातून बैठी हुई वीविंग कर रही थी. उसके बाद फिर वो कोई और शटल वाली रूमें आ गई, फिर पानी वाली आ गई, फिर हवा वाली आ गई. तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती जाती है. सिमिलरली इन .com आप अगर .net सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं तो 4 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाते हैं, 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाते हैं. By the time you graduate, you're already obsolete. So we became again obsolete. So we had to make a new product. We made a new product, and I came to Pakistan. I started a call center with 150 people. I was raided by